if the shortest wavelength in Lyman series of hydrogen atom is A, तो Lyman series का hydrogen atom का shortest wavelength is equal to A. तो उन्होंने पूछा है then the longest wavelength, क्या पूछा उन्होंने? longest lambda of helium plus in Pascal. सही है, हाँ या ना? Yes, sir. This is shortest. ठीक है, तो जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है that will be equal to 1 by RH ना, ये कितना हो जाएगा? This will be equal to 1 upon RH. सही है, देखिए shortest lambda of Lyman series of hydrogen atom is equal to 1 upon RH. सही है, हाँ ना? Yes, sir. ठीक है, और हीलियम में जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा that will be N1 और N2 कितना हो जाएगा बताइए? N1 कितना होगा? पास्टन सीरीज N3 है, so N4 and N3 होगा ना? Yes, sir. So N1 will be equal to 3 और N2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, राइट? सवाल है अच्छा ये बस निकाल देना आप कितना होगा. So 1 upon lambda will be equal to how much? 2 square into RH, right? Yes or no? Upon 1 by 3 square minus 1 by 4 square. ये 2 आया because it is helium. Helium का atomic number 2 होता है, so you have to put the z square, no? Because hydrogen नहीं है, यहाँ पे z square आएगा, तो 2 square. So 1 upon lambda will be equal to 4 into RH, और यहाँ पे आ जाएगा 1 upon 9 minus 1 upon 16. So this will be equal to 4 into RH divided by 16. 9 से कितना क्या आ जाएगा LCM इसका? 16 और 9 का I think मल्टीप्लाई ही करना पड़ जाएगा ना. कितना आ जाएगा? 4 सा, this is 4 and this is 9, then 2, then this is 16. 9 से करना पड़ेगा ना. 69 से कितना आ जाएगा? 160 minus 6, 160 minus 10 will be equal to 150, 154. 154 होगा ना? नहीं 144, sorry my bad. 144. 16 9 सा 144. Yes, sir. है ना? And this will be now 16 minus 9. सही है? Now let us see. This will be equal to 4 into RH into 16 minus 9 will be equal to how much? 7. सही है? Yes, 7 sir. होगा ना? Divided by 144. This is 1 upon lambda. तो lambda कितना हो जाएगा? Lambda will be equal to 144 ऊपर, बाकी सारे नीचे. 4 into 7 into RH. Correct, yes or no? Yes, sir. And now this will be equal to 144 divided by 7 4 सा 4 into 7 ही रहने दीजिए. 1 upon RH जो हो जाएगा, this will be equal to A. Right? Yes, sir. अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ रहा है? 4 how many is up? 4 and 144. 144 divided by 4. 4 3 is 12 and 2 remaining 4. 6 4s है ना? 24. So this will be 36A divided by 7 lambda. So this will be I think option number A होगा शायद, है ना? Option number A. बस यही करना था. Okay, sir. Okay. Martin, am I audible? Yes, sir. टेस्ट दिया था आपने? What? Did you give the assessment yesterday? Let me check. Let me check का क्या मतलब, याद नहीं क्या आपको? बहाने बना रहे हैं आप. Let me check. हाँ, दिया था या नहीं दिया था बताइए? नहीं दिया था ना?
Hmm? Tell me, Martin. Yes, sir. नहीं दिया था ना टेस्ट आपने? I didn't do it, sir. Why? I was I had exams studying. You had exams. अच्छा भाई. Okay. Correct. So today we are going to start a new chapter, that is the modern periodic table or classification of elements and periodicity in properties. I think that's the chapter's name. Classification of elements and periodicity in properties. Now, in this chapter, we will first of all start with today the initial efforts to make a periodic table or to get some kind of patterns, So here we have to see efforts of Daubernier, and he gave the law of triads. After Daubernier, we have to look at Newland. We have to look at his efforts and what was his law. His law was law of octaves. And then if you like, I don't think this is there in your syllabus. That is Laudermeyer curve, but it's which wording Laudermeyer curve. Then you will look at the Mendeleev's periodic table. So these are the three periodic tables that we have to discuss. After that, we have to discuss the modern periodic table, MPT, modern periodic table, and the modern periodic law. Now, starting with Daubernier's law, what Daubernier saw was, please see, the topic will be history of periodic table. Periodic table. Okay, please listen to me. Number one, right? Daubernier law of triads. Dauberniers law of triads. Now, one of the major difficulty with the people who were talking about periodic table and who were looking for some patterns inside the elements that they are dealing with, the main problem was they did not have many elements. Okay? So they had to work with whatever element was present at that time. और जिस भी एलिमेंट के बारे में उनके पास इंफॉर्मेशन था उन्हीं के बारे में बस वो बात कर सकते थे. Otherwise they did not have any other elements to talk about. So they were restricted with what? They were restricted with the number of element that was present. Now, please see, Daubernier's law of triad, it states that, please write, atomic weight of the middle element. He said that the atomic weight of middle element is arithmetic mean arithmetic means it is the average of other two elements which are arranged such that the elements having similar properties are placed in increasing order of atomic weight.
ठीक है, प्लीज लिसन। क्या मतलब हुआ उसका? इफ यू हैव नॉट स्टिल रिटन प्लीज लीव योर पेन असाइड एंड लिसन वेरी केयरफुली, है ना, लिख लीजिएगा आराम से, फिर समझा लेंगे। इफ यू हैव नॉट रिटन दिस थिंग्स डोंट वरी, लीव योर पेन असाइड एंड listen very carefully. Let us suppose we had 3 elements A, B, and C, and their properties were similar. What do I mean when I say properties were similar? That A, B, and C they gave similar type of reactions. मान लीजिए अगर A हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो B भी कर रहा है, C भी कर रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ तीनों रिएक्ट करते हैं। अगर A नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा तो B भी नहीं कर रहा, C भी नहीं कर रहा, ठीक है। अगर A को पानी में डाल रहे हैं तो पानी गर्म हो जा रहा है, B को डाल रहे हैं तो B भी गर्म हो जा रहा है, C को डाल रहे हैं C भी गर्म हो जा रहा है। The extent of heating, the extent of increase in temperature is debatable. That means ये थोड़ा ज्यादा कर रहा है, B थोड़ा कम कर रहा है, C थोड़ा ज्यादा कर रहा है, इस तरह से। But the heating effect is there if I am going to add it in water. Yeah, they make some certain kind of sound if I add them to water. ठीक है, so that's what they mean by similar properties. A, B और C के क्या है? Similar properties है, and यहाँ पे A का atomic mass सबसे छोटा है. That means A is the lightest, then B, and then C. This is the order of atomic weight. This was the order of atomic weight. And when they are arranged in the increasing order of atomic weight, तब डॉबरनियर ने कहा था कि mass of A plus mass of C divided by 2 अगर हम कर दें तो आपको मिल जाएगा mass of B. All of you understood what he said? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ गया? Sir. ठीक है, ये मतलब था उनका कि if I arrange them like this, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? You will get the arithmetic. And he gave a few triads, जैसे उन्होंने कहा था lithium, then you have sodium Na and potassium. The lithium molar mass is almost 7, sodium का होता है 23 and potassium का होता है almost 40. Can you see what is the average? अगर आप average निकालिए, mass of lithium plus mass of potassium divided by K करिए, divided by 2, 40 plus 7 divided by 2 कितना आ जाएगा बताइए जरा? एक सेकंड, पोटेशियम का 39 होता है, माय बैड, पोटेशियम इज नॉट 40, पोटेशियम इज 39, माय बैड, दिस विल बी 39, ठीक है। सो मिल गया आपको 46 by 2 which is equal to how much? 23. Yes or no, please tell me. Yes, sir. ठीक है, चलिए प्लीज राइट दिस डाउन। दिए कुछ एग्जांपल्स हो गए, एंड अदर some of the other triads he gave was calcium, strontium and barium, arsenic and antimony. He also gave chlorine, bromine, iodine. They were just looking for patterns, कुछ भी पैटर्न मिल जाए और उनको हम अरेंज कर लें, थोड़ा सा तो आसानी हो जाए। सल्फर, सेलेनियम एंड टेलेरियम। And here you will write limitation. Okay. Some of the triads, some of the triads had all three elements possessing nearly same atomic mass.
another technical limitation. It was not true for all the existing known elements. ठीक है, डन? यस नो प्लीज टेल मी। लिख लिया आप लोगों ने? Done, sir. Yes, sir. दिस वाज डॉट यस, सेकंड लिखिएगा। Newland's law of octaves. Huh? What did he say? Please write. When elements arranged in order of increasing atomic weight, increasing atomic weights, the properties of every eighth element were similar to the first one. ठीक है, क्या मतलब इसका? For example, at that time he had few elements such as lithium, फिर था इनके पास बेरिलियम अगला वेट, फिर था बोरॉन, then he had boron is B, then they had carbon, nitrogen, oxygen, फ्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 के बाद जो 8th एलिमेंट आ रहा था सोडियम, इट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज। बात समझ में आ रही है? उसी तरह सोडियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट था इनके पास मैग्नीशियम, देन ही हैड एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्लोरीन के बाद जो अगला एलिमेंट आ रहा था दैट वाज पोटेशियम, एंड पोटेशियम हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज विद द सोडियम एटम, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे एक और रीजन है दैट, देखिए जब लोगों के पास बहुत ज्यादा कुछ एविडेंस नहीं होता है, देन व्हाट डू? दे स्टार्ट टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम व्हाटएवर पैटर्न्स दैट आर एग्जिस्टिंग, है ना, क्योंकि इनके पास बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं थे, so there were few patterns in the known world at that time which are very much accepted, and that was the tunes. So the sa, re, ga, ma, then you have pa, tha, ni, और उसके बाद क्या आता है बताइए? नी के बाद सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, Sir. अगेन सा। तो जिस तरह से 7 के बाद 8th वाला फिर रिपीट हुआ। अब देखिए इंस्पिरेशन लेने के लिए कोई ऐसी एवरीथिंग इन लाइक कोई भी चीज अगर यूनिवर्स में ना, हम लोग अभी ना ये हो गया ये म्यूजिक है, ये साइंस नहीं है, ये म्यूजिक है, ऐसे बोलेंगे लोग, लेकिन एट दैट टाइम हर चीज पढ़ने वाली चीज थी ना, एवरीथिंग कैन बी स्टडी, और अगर कहीं से आपको कुछ इंस्पिरेशन मिल रहा है तो वहां से वो इंस्पिरेशन उठा लेते थे। सो ही वाज आल्सो, जैसे हम अगर आप लोगों को याद हो कि व्हेन वी स्टार्टेड विद द हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन एट दैट टाइम रदरफोर्ड वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोलर सिस्टम, कि सन है और चारों तरफ प्लैनेट्स उसके रिवॉल्व कर रहे हैं, एंड सिमिलरली ही सेड दैट कि बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा और चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। So he took inspiration from solar system. He was like यही होगा, मतलब whoever has created the complete universe, जो मैक्रोस्कोपिक लेवल में जो लेवल है
माइक्रोस्कोपिक लेवल में जो पिक्चर है वही पिक्चर एटॉमिक लेवल में भी आ जाएगी, है ना। इट्स वेरी पोएटिक इन दैट नेचर। सिमिलरली न्यूलैंड्स को भी क्या लगा, देखिए सारे गामा पादा नी सा होता है, उसी तरह से जैसे कि म्यूजिक के डिफरेंट डिफरेंट ट्यून्स होते हैं, मैच कर जाते हैं हर 8th वाले पे, उसी तरह से एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टीज क्या करेंगे, मैच कर जाएंगे, ठीक है। सो दैट वाज द सेइंग ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव। प्लीज राइट दिस डाउन। Done, sir. Done. Anyone still writing? Please see. Limitation लिख लीजिए इनका जरा। Only held true for lighter elements यानी कि लाइटर एलिमेंट्स के साथ साथ क्या लिख दीजिएगा, एक सेकंड, साथ साथ इसमें आप लिख दीजिए लाइटर एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक मास लेस देन 40 U, ठीक है, यानी कि अप टू कैल्शियम, दैट इज अप टू कैल्शियम, ठीक है। अनदर थिंग वाज, प्लीज राइट, elements that were discovered later did not follow the law, ठीक, 2 of them is fine. Done, sir. All of you done? Anyone still writing? Please let me know. No, I'm still writing, sir. जी जी आराम से लिखिए। That answer. Done everyone? No. अब बात आती है one of the most talented minds of chemistry, that is Dimitri Mendeleev. इसकी नाम आती है Dimitri Mendeleev. Now, I cannot pass through this name without mentioning like the situations, how आप, अच्छा एक पैसे बात आप लोग गेस कीजिए जरा कि कौन से कंट्री से होंगे डिमिट्री मेंडेलीव। Tell me. Russia. Russia. रशिया, वेरी गुड। कैसे पता लगा? His last name. His last name, correct. Now,
Dimitri Mendeleev, right? So Dimitri Mendeleev, he was initially schooled at his own house by his mother. His mom's name was Maria. And Mendeleeva. So it is just a feminized name of her husband. Okay. And Dimitri, when he was like till 7, 8 or 9, 10 years old, at that time, he entered the local school. And local school at that time, it was generally what I can say, a gymnasium in which some physical abilities. I mean, today we don't. Initially, the Indian schools, they also had some periods for exercises and all, right? But that is getting less and lesser nowadays. So initially, the schools were only gymnasium. You cannot teach much thing in the 1800s other than maths. And also in maths, you just need to teach arithmetics. Nothing more than that. कोई quadratic equation वगैरह उस टाइम पढ़ाने की जरूरत थी ही नहीं. So at that time, simple maths, a language, and then completely physical aspect, physical exercise वगैरह होते थे. And that is why the majority of the things are physical exercises. The school were known as gymnasiums and all. Now, Dimitri Mendeleev, he was very talented. He was a prodigy at his time itself. And what his mother felt that the gymnasium where he was studying, it is intellectually limiting in the sense that कि जो दिमाग है मेंडलीव का, उसके लिए जिम्नाजियम ठीक जगह नहीं है. उसके लिए जिम्नाजियम ठीक जगह नहीं है because he was not doing very well in the physical exercises that were being put. और एक डिसिप्लिन का भी मैटर होता है. अगर आप किसी, if you see any sports are much more disciplined than any other studies. स्पोर्ट्स अगर कोई आदमी करता है तो उसको इतने बजे उठना है, इतने बजे जाना है. Each and every day is going to be what similar and very monotone. But if you look at any of the creative things, ना, इसमें एजुकेशन भी एक, अगर रिसर्च के फील्ड में जाएंगे, so it is again becomes creative. So ऐसा नहीं कि रिसर्च आप अगर डेली जितना करें तो आउटपुट नहीं मिलेगा. So in research what happens, एक बार कोई चीज क्लिक कर गई, आपको आ गया, and at that time your learning is going to be 0 to 100. लेकिन स्पोर्ट्स के केस में ऐसा नहीं है. If you want to go from 0 to 100, you have to do some things daily. फिर उसके बाद आप लीनियर वहां पे ग्रोथ होता है. बट इन इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स देयर इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. अचानक से, हाँ, बट यू हैव टू पुट इन द वर्क एंड आवर्स, राइट? ऐसा नहीं है कि आप मतलब अगर बिल्कुल छोड़ा हुआ 10 साल से रिसर्च करते हैं, कुछ अचानक से कुछ उनके पास दिमाग में आइडिया आ जाएगा. यू हैव टू पुट इन सम वर्क. इट कैन बी अप्स एंड डाउन्स. तो वहां पे कुछ बिहेवियर भी इसका अच्छा नहीं था. जिम्नाजियम में बात नहीं मानते थे. बट ही डिड वेरी गुड इन मैथमेटिक्स. He did very good in the physical sciences, in the physics की बात कर रहे हैं ना, because physics was also taught. And then he also did very good in metaphysics. Metaphysics बोलते हैं philosophy को. Philosophy was also taught. अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, मेंडलीव की माँ को पता चल गया. मेंडलीव की माँ को क्या पता चल गया कि मेंडलीव का जो दिमाग है, it's much better than the other students that are present in the gymnasium. अब उसके बाद क्या हुआ, ईयर वाज आई थिंक 1850s की बात है, जब हाईवे वगैरह नहीं था रशिया में. 1850s में कोई रोड वगैरह नहीं था. एंड रशिया बीइंग अ वेरी कोल्ड एरिया, वहां पे हमेशा बर्फ रहती. नाउ व्हाट हर मदर डिड वाज, शी वेंट विथ Dimitri Mendeleev. Where did he go? I forget. I think she went to Moscow. Yeah, Maria went to Moscow. First journey with Dimitri Mendeleev. Why to Moscow? To get him enrolled in a university. And in blazing cold of the Russian weather, है ना, और उस टाइम कोई हाईवे भी नहीं है, so you don't have any good pathways. तो अब भटक के ही जाना है. So Mendeleev's mother only was present and Mendeleev was present, and they crossed somewhere around 2000 kilometers. There was a horse and there was a sleigh. You know what is sleigh? SLEIGH. sleigh पता नहीं पता? That thing on the horse. हाँ, घोड़े के पीछे ऐसे करके ऐसे पटरा से रहता ना, सिंपल स्लेट टाइप ऑफ थिंग, है ना, दैट इज स्लेट. तो वहां पे बैठ के एक लोग, एंड देन सम वॉकिंग वाज देयर.
नाउ व्हेन शी रीच्ड मॉस्को, तो वहां पे उन्होंने बोला कि नहीं भाई, ये तो मॉस्को का लड़का है ही नहीं, एंड दिस डज नॉट, मतलब ही डज नॉट बिलोंग हियर। हम मॉस्को में सिर्फ मॉस्को के रीजन के जो आसपास के बच्चे सिर्फ उन्हीं को लेते हैं, एंड दिस 2000 किलोमीटर्स ऑफ जर्नी वाज कंप्लीटली गॉन इन वेन, एंड ही वाज नॉट एक्सेप्टेड इन द मॉस्को यूनिवर्सिटी। ठीक है, लेकिन मरिया जो मरिया थी, डिमिट्री मेंडलीव की मदर, शी वाज वेरी मच, शी वाज लाइक, वो बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड थी दैट डिमिट्री मेंडलीव ही शुड बी एनरोल्ड इन अ सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये नहीं कि इधर उधर के किसी भी यूनिवर्सिटी में उनको ले लिया जाएगा। फिर से यहाँ से उनकी अलग जर्नी स्टार्ट हुई, 700 किलोमीटर्स मोर टू पीटर्सबर्ग, आई थिंक इट इज पीटर्सबर्ग, and then in the Petersburg University, which was like around 700 kilometers away from Moscow. तो लगभग एक हफ्ते का और ट्रैवल, एक दिन में आदमी कितना 100 किलोमीटर ज्यादा तो ट्रैवल कर ही नहीं सकता, तो ऑलमोस्ट 7 to 10 days of more traveling. And then what happened? Then I think he was enrolled, I think so. In Petersburg he was enrolled. So around 2700 kilometers of journey with only sleigh and with only walking. I mean, that was mother's love for Dimitri Mendeleev. And for sure, if she did not determine to go this long ways to Moscow University and then Petersburg University, then we could not have whatever Mendeleev did for chemistry. So this is one of very fascinating stories. If you get time, you can read about Dimitri Mendeleev in more detail. But अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इनके बारे में? What was his contribution towards the modern periodic table? Please write. After, we will write here Mendeleev's periodic table. He said that the physical and chemical properties of element, the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weights. He said that. Meaning. क्या मतलब? Please write meaning. When the elements are arranged, meaning when the elements are arranged in order of their increasing atomic weight, elements with similar property are repeated after certain regular intervals. ठीक है, अब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया था, एंड प्लीज राइट नेक्स्ट वन। जो उसके पास जो टेबल था
उसमें it had 8 vertical columns and those were called groups, 7 horizontal rows, those were called periods. The periodic table consisted, क्या consist करता था वो? Please write. 7 horizontal rows, and he called them periods. And secondly, क्या था इनके पास? 8 vertical columns called rows. 8 vertical column called rows. अब लाइक इसके बाद जो ये के पास 8 जो थे ना, उसके बाद एक 9th ग्रुप भी ऐड किया गया था आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस. लेट मी जस्ट गेट दैट Mendeleev's table. Mendeleev's table. So this looks something like this. Periodic table of elements based on Mendeleev's periodic law. Okay. As you can see, this was later added. The 0 thing was later added, and it has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 different groups, and 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These were later added, है ना? 8 और 9 को later add किया गया था. उसको लिख लीजिएगा बाद में, लेकिन एक चीज if you can see here, if I look at the 8th one, ठीक है, अगर हम 8th को देखें, the 8th group, if I see this one and if I see the 0 one, ठीक है, इनके अलावा ऑलमोस्ट 2 सब ग्रुप में सबको ऐड किया गया ना. This was get some other color. This was 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 2 अलग हैं. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ठीक है, इस तरह से 6 हो गया आपके पास. And then if you see this one, these 3, इनमें 2 हैं फिर. There are 2 different rows inside 1 different row itself. इनको A और B ग्रुप कहा गया था. क्या कहा गया था? इनको A और B ग्रुप कहा गया था. And each of them, they consisted a few elements. After that, wait a second. Isme, but they have not given blanks here. Otherwise, Mendeleev also gave some blanks known to ancients at night, known to Mendeleev. अच्छा, ठीक है भाई. Mendeleev के नोन में इतने ही थे सिर्फ, है ना?
That means when Mendeleev gave the elements, then he did not write anything. जैसे स्कैंडिनियम के बाद गैलियम है, गैलियम के बाद जर्मेनियम है, इसने ये ब्लैंक छोड़ दिया था. गैलियम एंड जर्मेनियम. आफ्टर जिंक देखिए क्या है. आफ्टर जिंक he had gallium and germanium. He left it blank. उसने बोला कि अभी ये एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए. उसी तरह से स्कैंडिनियम को भी इसने छोड़ दिया. कैल्शियम के बाद टाइटेनियम था, लेकिन उसने बोला कि नहीं, कैल्शियम के बाद एक और एलिमेंट आएगा, उसके बाद ही टाइटेनियम आएगा. सिमिलरली लैंथेनम के बाद हैफनियम को, he knew what is lanthanum but he left this blank. बिस्मथ के बाद पोलोनियम को उसने छोड़ दिया था. So there were many blanks in the periodic table of Mendeleev, showing that this table is not complete. It will be completed by the later people who come and discover these elements. And this was one of the most exciting thing about the Mendeleev's periodic table. Okay. लिखिए यहाँ पे Mendeleev left many vacant spaces in his periodic table. So should we draw this periodic table? No, you don't need to draw this periodic table. Left many vacant spaces in his periodic table, showing those elements will be discovered later in future. ठीक है. This was one of the advantages. जो limitation था, or the defects I can say, please write the limitation. In limitations we can write position of hydrogen, then lanthanides and actinides, जो कि F ब्लॉक के हैं. Were not correct. Second thing, anomalous pairs of elements were together. Some similar elements were placed in different groups and vice versa. Done, yes or no, please tell me. Done, sir. Done. Yeah, I'm doing so. So what are anomalous pairs? Anomalous pairs मतलब those pairs which are not similar in properties.
Anomalous का मतलब होता है dissimilar या फिर unlike, और you can say except, मतलब दो जिनके exceptions हैं, जो whose properties do not match. Okay, sir. More concise, तो पैटर्न का उल्टा हो जाएगा anomalous. एक चीज है पैटर्न में आ रही है और abruptly आ गई तो उसको क्या बोलेंगे, anomalous नहीं आ रही. That is anomalous pair. Got this? Yes, sir. Right, next, the modern That periodic also. law. Done. Right, modern periodic law. Now, जो डिफिकल्टी थी ना, वो डिफिकल्टी क्या थी कि लोगों को उस टाइम बहुत ज्यादा, मतलब मेजरमेंट्स के हमारे पास बहुत ज्यादा इक्विपमेंट नहीं थे. दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल दे रिलाइड ऑन व्हाट ओनली द एटॉमिक वेट्स. लेकिन जो कहानी असल थी वो कहानी थी एटॉमिक नंबर की. All of these things that you can see, they are all based on what? Atomic weight, atomic weight, atomic weight. Now, when the modern periodic law came, it said that physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number. ठीक है, you're right. Meaning when elements are arranged in increasing order of their atomic number, increasing order of their atomic number, the elements with similar property similar properties are repeated after a certain interval. So the switch between जो main principle था, the switch between from atomic mass to atomic number was the very critical switch, है ना? We based all our laws on atomic weights, but missing जो हमारे पास missing जो puzzle का missing हिस्सा था, that was the atomic number. जैसे लोगों को atomic number के बारे में पता चला, now all the mystery was solved and we got the modern periodic table. आप लिखिएगा cause of periodicity. It is due to repetition of similar outer electronic configuration. Outer electronic configuration after certain regular enthalpy. Done, yes or no, please tell me. 1 No, second, no, sir. sir. अच्छा.
Let me know once you're done. Done, sir. ठीक है, इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। Consists of, बताइए, how many horizontal rows? It consists of dash horizontal rows. Any idea? 9. Rows. 9 मतलब F ब्लॉक को मिला के 7 या 9? 7. 9. 9 9 वाला पार्टी कौन है? सारा कौन है? 9 वाला पार्टी कौन है? हाँ भाई, 9 वाला पार्टी कौन है? Me. सारा 9 लिखा है Yeah. स्कूल में? स्कूल I में don't लिखा know. है I 9? just guessed. अरे भाई साहब, गेस मार रहे हैं यार, ऐसे ना बिल्कुल 7 होंगे ना हीलियम वाला, एंड देन एट लास्ट यू विल हैव व्हाट? फ्रांशियम, लिनक, रब, कस, पर। सो लिनक इज गोइंग टू बी लिनक, रब, कस, पर। हाँ 7 लिनक, रब, कस, पर, या 7। देन horizontal rows will be called periods, and this naming is of Mendeleev himself, and it consists of 18 vertical columns called groups. It is further divided into four different blocks. Number 1, the S block. S block में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2। एस के बाद लिखिएगा P ब्लॉक। दिस इज, टेल मी, ग्रुप नंबर कहां से कहां तक? 13 से 13 से ओहो, नंबर 13। अच्छा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है ना, सॉरी, मैं 10th से हटा दिया गया ना ये? Yes, Periodic table sir. is that whole chapter. Sorry, my bad. Then we have the D block. कौन सा होता है? D block. D block is from 3 से लेके 12 तक। This is from 3 to 12. और होता है F block. F block सारा का सारा ग्रुप 3 में ही। Then everyone is on me. Yes, sir. 1 second. Done, sir. अच्छा, एक बात याद कीजिए जरा, आप लोग को ये याद है कि कॉपर और क्रोमियम का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो एक्सेप्शनल होता है, हमने कराया हुआ है। सॉरी, आवाज ही नहीं समझ में आई। अच्छा, यू हैव नॉट अटेंडेड कंप्लीटली। अच्छा, एक सेकंड जरा रुक जाइए। अच्छा, कॉपर और क्रोमियम का हमने कराया है क्या? आप लोग को याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है? कराया लगता है मैंने। No, sir. I didn't. No, I sir. don't think so. No, अलग से नहीं sir. कराया था ना?
बस हो गया ये। चलिए ठीक है, इसमें आ जाएगा। आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा ना फिर? Yes, sir. Yeah. हम अगले क्लास में ध्यान दिलाइएगा, ठीक है? अगले क्लास में इसको हम करा देंगे बोथ द थिंग्स, ये एक्सेप्शनल होता क्यों है एंड लाइक कौन कौन से एक्सेप्शनल में है। चलिए राइट, नेक्स्ट प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप। प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप नंबर, ठीक है ना? If you want to predict the period number, the block, the period, the block, and the group number, then what you have to do, you have to write the electronic configuration using the atomic number. First of all, write electronic configuration using atomic number. Using atomic number. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं फॉस्फोरस का। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस? सुनिए गाइस, फॉस्फोरस कितना होता है? एनीवन? फॉस्फोरस इज 15. 15, ठीक है। सो 15 में द नियरेस्ट नोबल गैस बिफोर फॉस्फोरस इज गोइंग टू बी नियॉन विथ एटॉमिक नंबर 10, ठीक है। एंड नियॉन इज व्हाट? नियॉन इज second noble gas, so 3s2 and then 3p3, 5 electrons we have filled. Is this clear? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. कितना लिखना होता है? नंबर 1 आप देखिए, सबसे पहले कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पीरियड नंबर? इट्स वेरी इजी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ pqn, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बताइए यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ pqn? 3. 3, राइट? आपको दिख रहा है ना, दिस 3 इज गोइंग टू गिव यू पीरियड नंबर, ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉक, ब्लॉक क्या हो जाएगा? द सबशेल व्हिच गेट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन। बताइए आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया है? एस में, पी में? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? जल्दी P. बोलिए गाइस, सारा पी में गया है, राइट? सो ये क्या बताएगा? दिस इज गोइंग टू टेल यू अबाउट द, दिस इज गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाट द ब्लॉक, ठीक है। अब उसके बाद आता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ग्रुप नंबर, ठीक है। पहले देख लीजिए ग्रुप नंबर को, उसके बाद लिखिएगा, ठीक है। डोंट राइट एनीथिंग, प्लीज लिसन। इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई द ग्रुप नंबर, you should already know what is the block. तो ब्लॉक आपके पास या तो एस ब्लॉक हो सकता है, या तो आपके पास पी ब्लॉक हो सकता है, और यू कैन हैव द डी ब्लॉक और द एफ ब्लॉक। देयर इज नो अदर ब्लॉक्स। इफ यू आर गेटिंग द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर क्या होगा? Group number will be equal to, group number is equal to number of valence electron. In the p block elements, group number will be equal to, G से denote करेंगे, group number will be equal to 10 plus the number of valence electron. और जब आपके पास D block आ जाएगा, then the group number will be equal to number of electron in ns
एंड n-1d, या फिर ns प्लस n-1d कर देते हैं ना। ns में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और n-1d में, तो अगर आपके पास 4s है तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns एंड n-1d। ठीक। और जब f ब्लॉक की बात आ जाएगी, इसमें आप लोग बताइए, आंसर आपके नोटबुक में लिखा हुआ है, ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा एफ ब्लॉक का। एफ ब्लॉक में अगर कोई एलिमेंट है तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 3. कैसे पता सौरभ, सौरभ बताएंगे, सौरभ कैसे पता 3 होगा, Because he सौरभ told. हमने लिखा है ना अभी, एफ जी. ब्लॉक कौन से ग्रुप में होता है, थर्ड ग्रुप में होता Group 3. है। इज दिस क्लियर, यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes, sir. सबको आ गया? Yes, sir. अब ये बताइए, अभी जो हमने फास्फोरस लिखा था, सो दिस इज इन द पीरियड नंबर, क्या है इसका, पीरियड नंबर है 3। ब्लॉक कौन सा है, दिस इज पी ब्लॉक, ठीक है, पी ब्लॉक है। अब पी ब्लॉक में क्या होता है, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बताइए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार्ट में बताइएगा जरूर, चार्ट में बताइए प्लीज, सेंड दी चार्ट टू सालिक, नॉट टू लेर्निवियो। व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फास्फोरस, भाई चार्ट, चार्ट में बोल रहे हैं ना, जो भी बता रहा है चार्ट में बताइए प्लीज। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भूल गए आप लोग, याद होगा तो हमने कराया था ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल कौन सा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द, इन फास्फोरस, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यस सिद्दीका करेक्ट, वेरी गुड। मार्टिन नो, नॉट करेक्ट, फिर से देखिए मार्टिन। हर्षा नॉट करेक्ट, हर्षा नॉट करेक्ट। valence electron is equal to the number of electrons in valence shell। वैलेंस शेल देखिए कौन सा है, और उसमें देखिए कौन कितने, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वैलेंस शेल। वंस अगेन वैलेंस शेल, आप लोग सब शेल देख रहे हैं, हाँ मार्टिन सही, सारा सही, वेरी गुड। हर्षा प्लीज ट्राई अगेन। काशिफ आपके तो आंसर ही नहीं आ रहे। हर्षा वैलेंस शेल कौन सा है बताइए, को आया नहीं आया, I हर्षा। didn't get it, sir. अच्छा वैलेंस शेल कौन सा है बताइए, वैलेंस शेल, Sir, P. वैलेंस शेल, शेल शेल नंबर होता है ना, शेल तो नंबर होगा ना, पी तो सब शेल है ना हर्षा, पी तो सब शेल है राइट, Sir, 3. 3, 3 इज द वैलेंस शेल। तो थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको बताइए जरा हर्षा। 5. 5 राइट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी हाउ मच नाउ, टेल मी। 5. आपने 3 लिखा था, ठीक है 5। अब बताइए द ग्रुप नंबर विल बी इक्वल टू 10 प्लस 5, कितना हो जाएगा 15। ऑल ऑफ यू गॉट दिस, यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर किसी ने नहीं लिखा है तो प्लीज राइट दिस डाउन, देन वी विल डू सम क्वेश्चंस। Done, sir. Okay. Then everyone, is there anyone who is still writing? Anyone who is still writing? No, ना? Yeah, I'm ready. अरे भाई तो पहले बताइएगा मार्टिन, ये इतनी दफा हमने बोला है, जो लोग लिख रहे होते हैं उनका काम होता है बोलना नो सर आई एम स्टिल राइटिंग, प्लीज वेट, ठीक है। हम ये स्क्रॉल करने लगते हैं उसके बाद आप लोग को ध्यान आता है। एफ ब्लॉक में लिख लीजिएगा ग्रुप नंबर 3। काशिफ आर यू देयर, यस और नो, प्लीज टेल मी। काशिफ नहीं लगता है आज क्लास में, काशिफ नहीं है।
Done guys, yes or no, please tell me. Martin हो गया? क्या है ये सब? Yes, sir. Done है. Send the answers in chat. ये सवाल कीजिए, फिर और उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्ट करेंगे. Send the answers in chat. I think पहला वाला सवाल क्या होगा आप लोगों ने? how many minutes? कितना मिनट दें आप लोगों को? पहला वाला हुआ नहीं अभी तक? पहला वाला नहीं हुआ? अच्छा अच्छा, एक Sir, सेकंड. I'll answer all of them together. अरे नहीं, करके कीजिए ना, कम से कम कुछ मिस्टेक होगा तो फिर हम बता देंगे ना आपको. If you are done with the first one, please send the answer. ऐसे 1 और उसके बाद फिर आंसर कर दीजिए. 1 ऐसे लिख दीजिए. 1 A B C D, जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है 1 के बाद A B C D में से कोई एक लिख दीजिए. अरे भाई साहब, ऐसे नहीं लिखना सिद्दीका. सिद्दीका, ऐसे नहीं लिखना है. कैसे लिखना है? Yes, sir, I'm writing it again. ठीक है. फॉलोइंग ग्रुप बताना भाई, ग्रुप बताना है ना. Sir, what do we need to do in the second question? Sorry, what? Can you explain how to do the second question? सेकंड क्वेश्चन. आप 56 वाले का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकती हैं सारा. Okay, okay. हाँ, इसका हो जाएगा ना. अच्छा, ये इन्होंने मतलब 26 वाला ऑप्शन सही नहीं है इसमें, है ना? 26 वाले में ऑप्शन सही है. आई थिंक ऑप्शन सही नहीं है इसमें ना. 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 3d, 4:2, 3d10, 4p6, 4d10, 5:2, 3p3, 4 5p3.
ऑप्शन सही नहीं है इसमें। पी ब्लॉक में जब होगा तो 10 प्लस होगा ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर के लिए। यस नो? सत्विका ने नेक्स्ट का आंसर कर दिया है। ओके सत्विका, लेट मी सी। नो आई डोंट थिंक सो सत्विका, फिर से कीजिए जरा। दिस वन इज नॉट राइट आई थिंक। Okay, sir. हर्षा आपका सही है। हर्षा एंड सिद्धिका, ये जो पहला वाला Yes, सवाल है, sir. पहला वाला सवाल है, आई थिंक उसमें ऑप्शन सही नहीं है ना। Yes, sir. ऑप्शन सही नहीं है इसमें। असल में दो तरह के नेमिंग्स ना चलते हैं जनरली। एक तो 1 2 3 4 वाला है ना, 18 तक। और दूसरा जो नेमिंग है वो है आपका 3A 4A 5A इस तरह से, जिसको हम लोग 13 बोलते हैं ना, जिसको हम 13 बोलते हैं उसको क्या लिखते हैं 1 2 3 और उसके बाद A। जिसको हम लोग 14 बोलेंगे, 14th ग्रुप, इट विल बी 1 V एंड देन A। जिसको हम 15 बोलेंगे दैट विल बी 5A। उसी तरह से सारा आपका आंसर आया फर्स्ट वाले का, आपने भेज दिया? सारा ने भेजा या नहीं भेजा है? सारा ने, मार्टिन नहीं, सारा ने नहीं भेजा ना But I सारा? don't know if it's right. भेजिए ना, तब तो पता चलेगा। जिब्रील आएंगे आपको बताने के Sir, लिए कि I सही है या can't. गलत है। Sir, I can't do the 31. 13th वन, 30. 30th वन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 56। सो व्हाट इज द नियरेस्ट नोबल गैस बिफोर 56? नियरेस्ट नोबल गैस बिफोर 56 कौन सा है? जेनॉन राइट? नहीं पता। Yes, sir. सिद्दीका, सिद्दीका पता नहीं पता। ए नियाज, Yes, sir. अरे करो, जेरोक्स, रंगीन, है ना? जेनॉन इज नॉट गोइंग टू बी व्हाट? The दिस dots इज and then 2। 6S2. हाँ वेरी गुड। तो फिर क्यों गलती हो गई आपकी? इट विल बी जेनॉन एंड देन 6S2। नाउ इट इज आस्किंग मी द ब्लॉक नंबर, राइट? अरे Yes, सिद्दीका, sir. माइक ऑन रखिएगा ना। सो टेल मी, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में जा रहा है? S. तो कौन सा ब्लॉक होगा? S block. I said that, sir. I said S block on my answer. आपने एस ब्लॉक बोला था, माय बैड। अच्छा सॉरी सॉरी, हमको लगा आपने जो मतलब डी लिखा ना, डी ब्लॉक हमको लगा, हाँ। हमने एस पढ़ा ही नहीं। मैं मेरी सॉरी। ठीक है मार्टिन, दिस इज करेक्ट। आई मीन दिस शुड बी एक्चुअली 15th ग्रुप, लेकिन अभी के लिए सही है 5th ग्रुप। इट शुड बी एक्चुअली 15th ग्रुप, ठीक है ना? बट दिस क्वेश्चन इज नॉट राइट, ऑप्शंस का सही नहीं है। नॉट गोइंग टू लुक एट दिस वन, ठीक है? ये कीजिए जरा, 32 एंड 123। सेकंड का डी, हाँ सही है, दिस इज करेक्ट। सारा करेक्ट, वेरी गुड। सारा आपसे हो रहा है ना अब? Yes, sir. ठीक है, आराम से कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आपको आ जाएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं। स्कूल में हुआ था ये सब या नहीं कराया स्कूल वालों ने? This chapter. दिस चैप्टर, हाँ। हर्षा, आपके स्कूल में हुआ ये चैप्टर अभी? Yes, it's मतलब done. डन। ये सब कर लिया आपने या So फिर नहीं I'm कराया not स्कूल? clear with the concepts though. यू आर I'm not clear with the concepts. क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स? I'm not clear. अच्छा नॉट क्लियर, अभी क्लियर नहीं, क्लियर अभी भी नहीं क्लियर? Yes, it's clear. अभी क्लियर।
स्कूल में बस थोड़ा ना मतलब टाइम नहीं देते हैं, पता नहीं क्यों स्कूल में टाइम लेकिन मिलना। स्कूल में एक गलती लेकिन बच्चों की भी ये होती है कि स्कूल में जनरली बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, है ना। स्कूल में क्या करने जाते हैं हर्षा बच्चे? Sir, I go to study. नहीं नहीं नहीं, बच्चे हम बताते हैं स्कूल में क्यों जाते हैं। बच्चे जाते हैं स्कूल में दोस्ती निभाने, है ना। सही कह रहे हैं हम सारा? हाँ No, सारा? sir. नहीं सही नहीं कह रहे हैं आप पढ़ने ज्यादा जाते हैं या दोस्तों से मिलने ज्यादा जाते हैं, बताइए। I can meet my friends outside. ठीक है, बट स्टिल आई एम सेइंग, आप स्कूल गए और दोस्तों के साथ ना बैठे हो, ऐसा हुआ है? बताइए सारा। No. नहीं ना। सिद्दीका, आप स्कूल गए हो और अपने दोस्तों के साथ ना बैठे हो, कहीं और बैठे हो, ऐसा हुआ है सिद्दीका? No, sir. नहीं हुआ है, लेकिन आप स्कूल गए हो और पढ़ाई नहीं किया हो आपने, ऐसा तो हुआ होगा, राइट। Yes, sir. यू वेंट टू स्कूल बट यू डिड नॉट स्टडी, तो फिर बताइए किस लिए जाते हैं स्कूल? बच्चे स्कूल जाते हैं दोस्ती निभाने के लिए। एंड आई मीन यू कैन नॉट ब्लेम, हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे, मतलब बच्चों को हम ब्लेम नहीं कर रहे इस तरह से। बच्चे स्कूल जाते हैं सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए, क्या कीजिएगा, 10 साल से जो लोग साथ पढ़ रहे हैं, एक साथ बैठे हुए, उनमें दोस्ती ही नहीं होगी तो और क्या होगा, राइट। एंड दैट्स द रीजन। बाहर के देशों में जो होता है स्कूलिंग वगैरह, वहां पे दोस्ती उतनी कुछ खास नहीं होती जैसे हमारे इंडियन स्कूल्स में दोस्ती होती है ना। एंड जो नेचर है हम लोगों का दोस्ती वाला, वैसा बाहर के स्कूल्स में नहीं होता है, ना ही वहाँ पे लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स होते हैं कि स्कूल से साथ हैं और एक क्लास में नर्सरी में साथ साथ साथ, ट्वेल्थ भी साथ साथ किया, उसके बाद जिंदगी भर दोस्त रहे। यू विल मीट, आई मीन रेयरली इस तरह के कुछ कुछ लोग होते हैं कहाँ पे, बाहर के देशों में। जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। लेकिन इंडिया में ये कैसी चीज है जो हमारे यहाँ दोस्त, लेकिन दोस्त आई मीन फ्रेंडशिप इज अ वेरी गुड थिंग, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, हम बस दोस्त अच्छे हों। अच्छा, एनीवन यहाँ पे किसी के बहुत अच्छे दोस्त हैं जो उनको पढ़ाई के लिए भी मोटिवेट करते हो? हर्षा? Yes, sir. अच्छा है। Yes, sir. मेरा सदीका, व्हाट अबाउट यू? Sorry, sir. डू यू हैव एनी फ्रेंड हु आल्सो मोटिवेट यू फॉर स्टडिंग? Yes, sir. Yes. है। व्हाट अबाउट गाइस, मार्टिन, आपके कोई दोस्त हैं जो पढ़ने के लिए बोलते हैं, या फिर क्या पढ़ रहा है अभी इतनी देर से, पढ़ाकू बनेगा क्या? Yeah, I think. कैसे दोस्त हैं आपके? सॉरी आई डिड नॉट हियर दैट, मार्टिन कैसे दोस्त हैं आपके? Yeah. मार्टिन क्या बोल रहे, कुछ समझ में आ रहा है किसी को? Yeah, yes, sir. यस यू हैव सम फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। Yeah, yes. Yes, in the sense, चलिए ठीक है, I'm asking good friends in the sense who motivate you for studying also, है ना, who remind you that कि भाई कैरियर भी कुछ है, सिर्फ स्नैपचैट के स्ट्रीक से दोस्ती नहीं रहेगी। स्नैपचैट इज अ बिग थिंग देयर ना, मिडिल ईस्ट में। Not really for me. ओह गॉड, अच्छा, सारा के लिए नहीं है लेकिन बाकी बच्चों के लिए है। I've heard that, I mean I have some cousins there, they tell me about this. चलिए, elements having atomic number 56 belongs to which of the following in the, this is D block, sorry, D option, S block. If the atomic number of an element is 33, it will be placed in which period? क्या हो जाएगा बताइए? 33, that means nearest noble gas before 33 will be argon, right? Yes, sir. Argon is going to be 18 and before that argon से क्या start होगा फिर? argon 3 में ना, so 4s2, how much is remaining? 3 इधर और 10 उधर, कितने हो गए? 13, 13 और 2 15, 4s2, then 3d how much? 3d 10, yes or no? और उसके बाद क्या आएगा बताइए? 4p 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 6, तो फिर कौन से ग्रुप में आएगा? 4p 6 आ रहा है, ये तो सही लिखा है हमने कि सही नहीं लिखा है हमने? कितने हो गए?
अरे 4p6 बोल दिया है किसी ने। So 4p3. 4p3 होगा भाई मेरे। हाँ 4p3 15 इलेक्ट्रॉन्स ना, 18 के बाद। हाँ 18 प्लस 15, कौन बोलता 4p6? तो ये फिर से गलत सा फिफ्थ ग्रुप हो जाएगा, लेकिन नहीं, ठीक है, माय बैड। सही से इन्होंने यहाँ पे ग्रुप नंबर नहीं दिया है। ठीक है, इट शुड बी, आई मीन इट शुड बी 15th ग्रुप। ठीक है, तो 15th और 5 में से कोई भी ऑप्शन आपका सही हो सकता है, दोनों तरह के ऑप्शन मतलब मिल रहे हैं यहाँ पे। मेनली दिस इज बिकॉज ऑफ ओल्ड नोटेशंस। ये बताइए 123। इसका ऑप्शन आंसर दिया ना बहुत सारे लोगों ने, आई थिंक सिद्दीका ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए, पीरियड इज थर्ड पीरियड, सही है। थर्ड पीरियड में दो ही आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर इज गोइंग टू बी 4 प्लस 2, दैट 6 प्लस 10, दैट विल बी 16। हाँ ये ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए। आई एम राइटिंग द Z, दैट मीन्स द एटॉमिक नंबर। आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, एंड देन यू विल राइट द पीरियड, द ब्लॉक एंड द ग्रुप। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए। 53, 98, 75 एंड 55। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा नहीं लिखना है आप लोग को, यू हैव टू। चलिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प के लिए आपको यहाँ पे लिख देते हैं, हे न्यास अरे करो जेरोक्स रंगीन। ठीक है, सो हीलियम एटॉमिक नंबर इज 2, नियॉन का कितना होता है 10, आर्गन इज 18। व्हाट अबाउट क्रिप्टॉन? क्रिप्टॉन इज 36, 54 एंड रेडॉन का कितना होता है 86। ठीक है, this is noble gas number 1, 2, 3, 4, 5 and 6, and the formula for writing electronic configuration is ns. Then we have n minus 2f, then we have n minus 1d, and then we have np, है ना। you have to plug in the value n, और n की वैल्यूज डालेंगे, अगर सही है तो फिर if it is valid तो उसको रख लेंगे, वैलिड नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए राइट दिस डाउन, आराम से कीजिए, लेट मी नो।
Then भी नहीं हुआ. Done with at least one, yes or no? Tell me. Guys. Yes, sir. What about others? Sara, Siddika, Harsha and Martin. Harsha का हो गया. Sara, Siddika, Martin. काशिफ तो है ही नहीं. पहले वाले में क्या होगा बताइए? Which noble gas? Krypton, right? है ना? Yes. Krypton, and it is Krypton में कितना आ गया? 36 आ गया. Remaining कितना हो गया बताइए? 36 minus 53 minus 36. 17, right? Yeah. So this will be starting with Krypton is 4. तो कहाँ से start होगा अब ये? 5 से, right? 5s2 है ना? 5s2 and after that 4d 4p 4d 10 and then 5p 5p 5. 5. So the period is going to be which one? 5th period. The block number is going to be p block and the group number will be 2 electron here, 5 electron here, 7. That will be 17. सही है? हाँ या ना? अगला क्या हो जाएगा? रेडॉन. This will be Rn. Then Rn is 86. So remaining is how much? 4 और इधर 8, 12. 12 is remaining, right? Yes or no? Yes. Yeah. Now you will have रेडॉन हो गया आपके पास कितना? 6. So this will be 7s2. Then you will have 5f 5 12. 4 10. कितना बच रहा है? How much is remaining? 12. Yeah, okay. 10. नहीं 10. 10 is remaining. अब है ना? Yeah. 5f कितना हो Yes. जाएगा? 10. So period is Yeah. going to be what? Period is going to be 7th period, right? है ना? Yes or no? Yes, sir. 7th period block Yes, will be sir. F block and group will be 3rd group. 75 में आ जाते हैं. 75 यानी कि you will have xenon. Xenon है 54. तो 19 बचा हुआ है, right? Yes or no? 19 remaining. Yes. 6s2 4f 6s2 4f 14 हो जाएगा, राइट? 4f 14 करेक्ट है. 16 और क्या बचा? which d will be 5d 3. सही है? हाँ या ना? देखिए जरा. Yes, sir. सही है. क्या हो जाएगा? p Yes, ब्लॉक में sir. हो जाएगा आपके पास. दिस इज गोइंग टू बी which period is going to be 6th period. ब्लॉक हो जाएगा d ब्लॉक. अच्छा, ग्रुप क्या हो जाएगा बताइए जरा? ग्रुप विल बी 3 + 2. 5. 5th ग्रुप, राइट? यस और नो? सही है? Yes, sir. नहीं, Yes, sir. 3 + 2 आ रहा है. 75 एटॉमिक नंबर. So it would be 5d5, right? 25 होगा. How many electrons are there missing? 21. 21 ना? Yes, sir. हाँ ठीक है. 55. So group number will be 7. 5 और 2 7. 55 में क्या हो जाएगा? It will be easy हो गया. Xenon हो गया. And after that 6s1. So period is going to be 6. Block is going to be S and the group is going to be 1. ठीक है. आ गया सबको? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. चलिए. So can you give one more just for like practice afterwards? After class? मतलब After class? homework. No, that's more these type of questions. आफ्टर क्लास का क्या मतलब? होमवर्क में ना? Yeah.
हाँ होमवर्क में इस तरह का सवाल ना, हाँ देंगे हम, होमवर्क तो मिलता है आपको, होमवर्क नहीं मिलता No, है? now. अभी चाहिए, अभी और कर लीजिए। चूज एनी नंबर सारा, चूज कीजिए आप नंबर, लेट अस सपोज 42। आगे क्या होगा? विच नोबल गैस, नोबल गैस नंबर कौन सा नोबल गैस बताएं? Clear. Krypton. So krypton is done with 36 electron. How much is remaining? How much is remaining? 6 remaining, right? अरे ये सारा माइक ऑन करके रखे ना Yes, sir. सारा जी। How much is remaining? अच्छा आप कीजिए, आप कीजिए, कब कीजिए, मैं बता रहा हूँ। Sir, सॉरी मैं मतलब elementary. मुझे समझ आ गया, मगर मैं चाहती हूँ आप मुझे क्वेश्चन दे, like so that I can practice after this classes. अच्छा जस्ट आफ्टर दिस क्लास, ठीक है ठीक है। एटॉमिक नंबर 42 लिख लीजिए, और क्या लिखिएगा? 42 लिख लीजिए, 88 लिख लीजिए आप, कितना कुछ कम का लिख लीजिए, 14 लिख लीजिए, 26 हाँ 26 लिख लीजिए, 38 लिख लीजिए, और कितना लिखिएगा? और थोड़ा बड़ा लिखिएगा तो 77 कर लीजिए आप, और आपको अगर बस चाहिए तो बस काफी ठीक है। बाकी लोग भी लिख लें, जस्ट